संस्था से नहीं जुड़ी थी तो मुझे डर लगता था कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। पहले नहीं पैसा एक पैसा कमाई नहीं होत रही। से 20टा बांस मधुर काम चली बिक्री चली संसार भी मैनेज करुँच। एना सुविधा है ये पाखरे ये जाई भी पारुछि आसी भी पारुछि। क्योंकि बकरी मिलने से 2000 या 3000 से भी ऊपर भी बेच सकते हैं सर। उन्नति करके गछ लगे चेष्टा कर बारिटा सफा कर किसी गोटे सुविधा पाइला उन्नति करने चेष्टा कर। 4 years ago, VSO in partnership with UK Aid started on a journey of working with people with disability in 4 states of India. We have worked to enable them to access their rights and entitlements and to help them live a life of dignity and respect. This is our story. This is a journey that 7 INGOs have undertaken to address issues of social exclusion in India. People with disabilities comprise nearly 6% of the country's population. This is a sizable number, and yet there is enough evidence that says that they lack access to basic services such as healthcare, education and livelihoods. VSO, as part of its IPAP initiatives, has strived to address all these issues in its entirety. Collectivization of voices is an important process in any journey of transformation, and recognizing this, VSO, as part of its IPAP initiatives, has supported 4 state-based networks of people with disabilities and 3 women-centric networks in the states of Orissa, Jharkhand, West Bengal and Chhattisgarh. ये सब जुट के हमको अच्छा लगा है। इतना फ़ायदा 1 किलो पेपर में 20 रुपया होता है तो 8 रुपया तो पेपर का दाम और 2 रुपया का लाई तो 10 रुपया फ़ायदा होता है 1 किलो पेपर में। एक दुकान में 5 रुपये, एक दुकान में तो 4 रुपया। ब्लॉक में मीटिंग होत रही से मालूम है गए कि सब वहाँ भरत हथिन से तो के जाए पड़ता। पहले नहीं पैसा एक पैसा कमाई नहीं होत रही। इसमें फ़ायदा हो रहा है तो 300 रुपया हफ्ता में आवत है। ऑफिस रु पैसा आसवा को 20टा बांस किना है से 20टा बांस मधुर काम चली बिक्री चली संसार भी मैनेज करुँच। के छुआ परीक्षा जीव के छुआ स्कूल ये तो परीक्षा 3 पुअर परीक्षा अच्छी सर से बांसरू सब पैसा काढ़िक खटिक सब आडू एकला लोक मैनेज करुँच सर। हाँ मास को सेमती इनकम भी हिसाब कला माने 4000-5000 हुए खर्च तो सार अच्छी। Not only have we focused on the capacity building of the networks, but we've also linked them with banks and financial institutions to ensure their independence and sustainability. 12 आदमी हम लोग हैं सर। 12 आदमी में डीपीओ बनाए हैं और ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप के अंदर हम लोग पैसा भी जमा करते हैं और ये पैसा बैंक में भी जमा है। अभी हम लोग पास खाता भी हम लोग का खुला हुआ है। उस पैसे से आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। जो है सो फ़ायदा आगे का हम लोग का बहुत सारा सुविधा हो चुका है। क्योंकि बकरी मिलने से 2000 या 3000 से भी ऊपर भी बेच सकते हैं सर और आगे हम लोग काम भी कर सकते हैं सर। तो यही फ़ायदा है। Volunteering is at the core of VSO's approach to development, and in the last 4 years, we have placed over 40 trained volunteers from across the world with partners. These volunteers come with diverse skills such as communications, documentations, therapy, monitoring and evaluation, and organizational development. They help the partner in build sustainable and lasting capacities within their setups.
My role is to support the staff to improve their understanding of the assessment and management of children with movement problems. They have an understanding of the techniques, but it's important to have an understanding of the difficulties that the children have and how they present functionally, so that they can actually support them to be sort of bigger part of their family and in the community. The staff now have a better understanding of movement problems and how to help the families improve the child's function, and by improving the child's function, the children are therefore able to take a bigger part in their family and in their community, and therefore is enhancing children with disabilities inclusion in the local community. Disability leads to poverty, and poverty leads to disability. And there is more than enough evidence to prove that approximately 70% of people with disability are poor and hence marginalized. VSO has promoted entrepreneurship and ensured sustainable incomes for people with disabilities. सर मो नाटा हूँ श्रीधर महापात्र मु नृसिंहदेव आंचलिक परिषद किसी गछ पाई गछ पाइबा तो बारीटा को सफा करी आज्ञा गछटा उन्नति करी से किसी जन्नी भेंडी टमाटो एमती किसी लगे आज्ञा लगे किसी बिक्री कर 2 पैसा रोजगार पाई पाइबा से किसी उन्नति करी आज्ञा बेनिफिट आज्ञा घर खायापी जन्नी भेंडी सब होती मार्केट में किसी लगे पार्छ आज्ञा जन्नी भेंडी टमाटो जहाँ लगे भितर कि सब लगे पार्छ बाहर लगे 2 पैसा मो 2टा झील गोटे पुଅ को ही आडजस्ट कर चली पार्छ किसी उन्नति करी गछ लगे चेष्टा कर बारीटा सफा करी आज्ञा कर किसी गोटे सुविधा पाइला आज्ञा उन्नति करने चेष्टा करूँ आज्ञा उन्नति कराया मुझे ट्राइसाइकेल धरती ट्राइसाइकेल धरिकी निजे जा नड़िया मंदिर जाए आज्ञा नड़िया तो मार्केट ना पूरी प्राय मंदिर नड़िया नहीं बिक्री करे आज्ञा वो बोल रहे हैं कि हमारा जो केला गछ हमने लगाया है उसको जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसको काट कर हम दुकान में बेचेंगे, उसका पैसा लाकर हमारा पढ़ाई में खर्च करेंगे। वो बोल रहे हैं कि जब मैं स्कूल से आती हूँ तब पापा के साथ मिलकर यहाँ पर वाटरिंग करते, जैसे पौधों को पानी दे रहा हूँ। Contribution of IPAP program of VSO to the helpline has been in terms of publicity, which has been done through flyers and posters which were created, and the second thing, the second support which has been provided to us, it's the technology, advanced technology systems and technology which will support the helpline in a better way. Third part is the creation of the networks, so 2 networks, Delhi based helplines network and National Disability Helplines network, and we have the fourth is the capacity building, where we have created a training module for the helplines, and the fifth is the information dissemination. Barriers in the physical environment greatly restrict the mobility of people with disability. It confines them into their homes and restricts their participation in all spheres of life. VSO has worked extensively in promoting barrier-free access at all levels. We believe that access is a right, and when denied, it affects the dignity of a person. VSO has also supported disabled people with accessible household toilets. वो अभी संस्था हम लोग को शौचालय दी है,
विकलांग लोगों को, और हमको भी अभी मेरे शौचालय बन गया है। पहले मैं जब संस्था से नहीं जुड़ी थी तो मुझे डर लगता था कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। तो धीरे धीरे हम संस्था का मीटिंग में जाने लगे। 1 किलोमीटर दूरी में मुझे शौचालय जाना पड़ता था, चाहे पानी रहे चाहे तूफान रहे, लेकिन शौचालय लगने पर तो जाना ही पड़ता था। और चलने में भी दिक्कत होती थी, और चलने के यानी कि विकलांगता के कारण कभी कभी रास्ते में गिर भी जाती थी, और रास्ता भी ठीक से नहीं रहता था, इस कारण मुझे चोट भी लग जाती थी और परेशानी बहुत होती थी। और अभी रूम के अंदर ही शौचालय बना है तो अभी मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि खुद ही चल लेती हूँ। अभी शौचालय बन गया है तो मैं आराम से किसी बिना सहारे से जाती हूँ और शौचालय करके आती हूँ और अपना काम ही करती हूँ। असुविधा थिला ई पैखाना हेइथिला नी आगे करूला आउ जे हम बाड़ी रे जाउथला आउ धुरियाड़े नहीं जाउथनु चलै करी बाड़ी अच्छी घेर भितर देखो असुविधा होता है एना सुविधा हला ए पाखरे ये जाई भी पारुछि आसी भी पारुछि। Our collaboration with VSO has been for a long time now, almost 10 years, and we have been partnering on issues related to research, trainings, and creating access coordination cells in the states of India, wherein people with disabilities and architects, engineers, government officials come on the same platform and work together to make building infrastructures, transit systems, as well as pedestrian environment accessible and inclusive for people with disabilities. One of the biggest happenings in the internationally in the last few years has been the enactment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. India has also ratified this convention. But when you have a convention, every country must interpret the convention and the rights in the conventions according to the situations in their country. And one of the biggest things that the VSO IPAP program has been able to do for us at Arth Astha and supported us to do was to look at some of the articles of the convention and to understand what is happening in our country in that area, and to be able to come up with toolkits that disability activists all over the country will be able to use and then be able to advocate for change. From advocacy to networking to livelihoods to capacity building, we have indeed covered a lot of ground, but certainly not enough. We stand committed to build a society where there is inclusion and equality for all.